Okay, so today we'll be discussing about the chapter is matter around us pure. Let's put this heading and then we'll continue. The name of the title is matter around us pure. Okay. In the new syllabus that they have issued, they have mentioned this as exploring mixtures. Exploring mixtures. Okay. तो जो न्यू सिलेबस ड्राफ्ट दिया है उसमें हमें ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर के नाम से है, और जो बुक में एनसीईआरटी में हमारे पास ओरिजिनली जो टॉपिक अवेलेबल है वो मैटर अराउंड द प्योर। इट्स द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू डील द सेम थिंग। ओके, नाउ बिफोर गोइंग इनटू मिक्सचर्स, सबसे पहले तो हमें मैटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना होगा एंड विल क्लासिफाई इट इनटू वेरियस वेरियस टाइप्स। फिर हम उसमें से ही एक टाइप आने वाला है मिक्सचर, जिसमें अपन कंटिन्यू कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो पहले तो मैटर को डिफाइन करते हैं। हमने डिस्कस किया जैसे कि मैटर जो है दैट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, है ना। तो दैट इज व्हाट मैटर इज। अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, पूरा यूनिवर्स, क्या था अपन ने बात की थी, पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे आसपास एक मैटर है। चाहे उसमें से कोई पार्ट अपने को दिखता हो या ना दिखता हो। दिखता हो तो मैं बहुत सारी चीजें हैं, नहीं दिखता हो जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एयर, लाइक दैट, है ना। तो ये सब चीजें भी क्या है, मैटर में आती है। ठीक, तो सबसे पहले अपन मैटर को डिफाइन करेंगे। मैटर का स्टेटमेंट लिखते हैं, डेफिनेशन डालते हैं। बिल्कुल बेसिक जनरल डेफिनेशन है। एनीथिंग एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एंड हैज मास। ठीक है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज अ मैटर, है ना। ये तो मैटर हो गया, मैटर का जनरल डेफिनेशन हो गया। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करेंगे अलग अलग टाइप्स में, और उन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी हमारी निकल के आएगी मिक्सचर, जिसको अपने को चैप्टर में डिटेल में आगे बढ़ाना। ठीक, तो पहले अपन एक मैटर का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन बनाने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट बनेगा पूरा एक। मैटर, सबसे पहले इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। फ्लो चार्ट के फॉर्म में चले गए, पूरे सब पार्ट्स आने वाले हैं इनके अंदर में। मैटर का कितने फॉर्म्स हो सकते हैं और उन्हें कितने फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट वी आर गोइंग टू चेक। मैटर को एक हम एक पॉइंट हम उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिजिकली मैटर कितने तरह का होता होगा वो यहाँ कैटेगराइज हो जाएगा। एंड ऑन द अदर एंड हम उसका केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, दो फॉर्म्स में हम मैटर को बाइफरकेट कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, यू गाइस आर ऑलरेडी वेरी वेल अवेयर अबाउट कि फिजिकली मैटर कितने फॉर्म्स में आता है ना, फॉर्म्स ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं। तो वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, रिस्पेक्टिवली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे इतना ही बाइफर्केशन था। मेन हमें केमिकल क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड करना होगा, इसलिए मैंने उस स्पेस को वहां पे मेंटेन किया है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अभी सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम कुछ रैंडम एग्जांपल्स, दो दो एग्जांपल यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सॉलिड में आप कोई भी दो नाम लिख दो। देर आर इनफाइनाइट थिंग दैट यू नो, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। आप उसमें से कोई भी दो चीजें आप सॉलिड में मेंशन कर दो, एंड लेट्स जस्ट हैव अ रिव्यू। एनी टू थिंग्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, two entities each, solid, liquid, gas. Okay, solids, pen. Next, eraser, Ice. ice. Okay, okay. ठीक है, आपने लिख दिया एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, है ना। अपन चाह रहे थे मटेरियल, मटेरियल। ऑब्जेक्ट्स लिखने लग गए फिर तो लिमिट ही क्रॉस हो गई, मतलब, है ना। आई कैन यूज एन नंबर ऑफ थिंग्स। लेट्स हैव मटेरियल। मटेरियल मींस, हाँ, लाइक वी कैन, मटेरियल, वुड, मेटल, है ना, like that. Liquid, liquid. Let's have some materials. Liquid, water, oil. Okay. Now, gas. हाँ, उसको फिर पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन, मीथेन, there are a lot many that could have been included, है ना. Okay. So that was the general classification that we guys are already aware about. Physical classification, bifurcating the matter into solid, liquid and gas. Okay. So that was of no concern. Let's move to the next part, chemical classification. Now, this is what our chapter is about, chemical classification. Okay. Under chemical classification, we'll categorize in two parts. We'll categorize in two parts. Okay. One is mixtures that we'll be talking about in the chapter, and something which is not a mixture is pure substance. Something which is not mixture is a pure substance, pure form of matter. Like the title of the chapter is saying, is matter around us pure? So what we will be answering is, yes, we have some pure form of matters, and the ones which are not pure are mixtures. Okay, they are mixtures. So let's move into detail into the chemical classification. Fine. Under mixtures, we are going to deal two forms. And in pure substance also, we are going to deal two forms. Two forms under both of them. We'll categorize both of them into two halves. Okay. Mixtures are categorized as homogeneous, heterogeneous. The whole chapter discussion will be about them. And homogeneous, heterogeneous. Under pure form of matter, we have elements. Must have heard, na? Elements. Okay. And elements combine to form compounds. These two things are pure form of matter. Elements and compounds
are pure form of matter, and the rest are mixtures, either homogeneous or heterogeneous. Okay, moving further. Under homogeneous, we have a single title called solutions. It includes only one kind of mixture called solutions. Solutions. If I go for general example, although we are going to deal about them in detail, but just for general examples, let's see sugar in water, and a sugar solution, salt solution, okay, and a sugar in water, salt in water, water. What about water? Where Means. water is a compound. Okay. Solution word means it is dissolved in water. Solution word itself indicates that the particular entity is dissolved in water. Okay. Yes. There are a lot many. A lot of things can be dissolved in water. So all of them can form a solution. If they completely dissolve, then okay. Heterogeneous. Heterogeneous have two categories. Let's close that part. Homogeneous, it's done for now. Under heterogeneous, we'll be studying two heads. Under heterogeneous, we'll be studying two heads. They are called colloids, suspension. Colloids and suspensions. हेट्रोजिनस में हमें दो कैटेगरीज कवर करनी है, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस. डिटेल कवरेज होगा. फॉर नाउ जस्ट विल जस्ट पुट around two examples. Milk is a colloid. Milk is a colloid. Okay. Then fog is a colloid. Fog, another natural fog. Fog. Suspension, muddy water. Chalk in water. These are suspensions. Something that settles down. होता नहीं मडी वाटर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो मिट्टी मिट्टी नीचे बढ़ जाएगी, पानी पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा. तो वो सस्पेंशन. ठीक है, विल टेक देम इन डिटेल लेटर. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द प्योर सब्सटेंस पार्ट, where we need to cover up elements and compounds. Compounds we do not have types. We'll just put examples. Elements को मिलाकर compound बनते हैं, है ना. जैसे कि water itself is a compound because it is made up of H and O, hydrogen, oxygen, right? Right? Carbon dioxide is a compound because it is made up of carbon and oxygen. All of them. Sodium chloride, there is no limit for writing compound. Sodium chloride, the salt that we eat, NaCl, all of them are compound which contains two or more elements. That's it. Anything that contains two or more elements is a compound. Okay? Two or more elements, it's a compound. Okay? One more part. All of them will be dealt in detail later.
Right now, we are just categorizing them that what all forms are included in matter. Now, we have to break down this element category into three. Take it further. One, two, three. We have three forms of elements with us. They are respectively, you must have heard them 100%. Metals, non-metals, and what the third one? No, not yet. Oops. Metal, non-metals, and metalloids, which have some property of metals and some property of non-metals. Metal, non-metals, metalloids. Okay. Metal, non-metal, metalloids. Okay. We can easily enlist metals, I guess. Iron, uranium, copper, silver, gold. There are lot many. Lot of metals are available with us. Okay. Non-metal, non-metal, oxygen, nitrogen, carbon. These are some non-metals. Coming to towards the special category of metalloids, boron, silicon, germanium, arsenic. These are some metalloids. So we have summarized all the types of matter in a single flow chart. All possible aspects and categories categorized. So matter has these many forms and types. Physical and chemical classification. Okay.